Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva. राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिवचनिष्ठी। एतद्यात्वपुरो चिन्तानं मात्र स्पर्शैक्षय मुह भावा सिद्धुं प्लो दृष्टो हरि चार्यानुवर्तनम्। You must be wondering, why am I reading Bhagavatam when the session is on spiritual counseling? Right? होता है. Because the verse now is about counseling. That's why the lecture is on Bhagavatam only, don't worry. But the verse is very important. If everyone ये दो वर्ड्स जो समझ गए सब, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. They will be anxiety free, stress free, depression free. This is the secret. These two verses, जो next दो वर्स हैं, are the secret of a blissful happy life. सबको क्या प्रॉब्लम होती है? यही प्रॉब्लम होती है. प्रभु जी स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, और क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और क्या है हार्ट ब्रेक है, दिस है दैट. यही होता है ना सबको प्रॉब्लम. तो ये दो वर्स उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो नारद मुनि दे रहे हैं. कौन दे रहे हैं? नारद मुनि. दिस इज द बिगेस्ट वैक्सीन बोलो, कवच बोलो, जड़ी बूटी बोलो, जो बोलो, आपके सारे प्रॉब्लम्स का दो वर्ड्स में सोल्यूशन है. क्या बोल रहे नारद मुनि? इट इज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड बाय मी दैट दोज हु आर ऑलवेज फुल ऑफ cares मतलब problems and anxieties due to desiring contact of the senses with their object can cross the ocean of nescience on a most suitable boat. What is that boat? The constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Constant chanting. When you chant constantly, then all that is troublesome to the heart is destroyed. Chanting is the perfect solution for all your problems. भगवद गीता में कौन सा रिलेटेड श्लोक है इसका? कौन बताएगा? ये जो है anxiety due to desiring contact of the senses with their object can cross over. दया तो विश्व पुंसां संगस्तेजु प्रजायते संगत संजायते कामत क्रोध विजायते क्रोध भवन्ति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Anyone knows this श्लोका? किसको पता है श्लोका? दोनों श्लोका. दया तो विश्या पुंसा संगत तेजु प्रजायते संगत संजायते काम क्रोध विजायते. While contemplating the object of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. Right? और यहाँ पे क्या लिखा है? It is personally experienced by me that those who are always full of care and anxiety due to desiring contact of the senses with their objects can cross over. तो इस श्लोक का solution यहाँ पे दिया है. What happens? What is the work of the mind? Thinking, feeling and willing. All our problems, stress, anxiety सब क्यों होता है? क्योंकि हमें किसी चीज से attachment हो जाता है, या किसी चीज पानी है, desire और lust, दो चीज.
What is the two things? Desire and lust. So you have strong desire to get anything. मुझे ना घर चाहिए मुझे, अच्छा, या गाड़ी चाहिए मुझे, या मेरे मन होता है ना कॉलेज में, I want this girl, right? And if someone takes that girl, then what happens? Anger. So desire, so anxiety, anger, everything happens. So when we become attached to an object of senses, anything, the object could be anything. तो उससे हमारा जब अटैच होता है तो माइंड सबसे पहले उसके बारे में थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग करता है, एंड सेंसेस एक्ट करती है. और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि उसका डिजायर है तो उसके लिए आपके अंदर लस्ट, उसको पाने के लस्ट हो गया, और लस्ट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एंगर अराइज होगा, और एंगर अराइज हो गया तो उससे क्या होगा? क्रोध भवन्ति सम्मोह, delusion. From anger, delusion arises. Sammoha, delusion. And sammoha means आप illusion, क्या करें क्या नहीं करें, you are in doubt, अरे मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, you start doubting yourself, you start doubting others, you start doubting everything. So this is called delusion. From delusion, bewilderment of memory, you become totally bewildered. अब मेरे साथ में भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ मैंने क्या बिगाड़ा, किसी का क्या नहीं किया, ये वो, you start questioning everything around you. And when the memory bewildered, intelligence is lost. Then अरे सब बकवास है ना, ये भगवान या ये सब कुछ भी नहीं होता है ना, ये सब बकवास है. And then what happens? Then you start doing wrong. You start doing something wrong. Either you fall into wrong association. बोलते हो कि forget it, कुछ नहीं होता, अच्छाई से कुछ नहीं रखा है, enjoy करो, ये करो, वो करो, तो पूरा इंटेलिजेंस आपका लॉस्ट हो जाता है. Then you want to have enjoy and enjoy without worrying about the consequence of it, because your intelligence is lost. So उसके पहले बोलता है अरे हमको अच्छे काम करने चाहिए, फिर अरे कौन अच्छे काम, क्या कुछ नहीं होता, उससे फायदा कुछ नहीं है, सब तो खराबी हो रहा है हमारे साथ, कौन भगवान, कुछ नहीं है, ये वो. भी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, मैं तो किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरे ऐसे क्यों हो रहा है. देन बेटर है हम एंजॉय करें लाइफ, चोरी करो, ये करो, वो करो, ड्रग्स लो, स्मोकिंग करो, एंजाइटी, और उसमें इंटेलिजेंस लॉस्ट. व्हेन द इंटेलिजेंस लॉस्ट, one falls down again to the material pool. Then again, you again fall down, means you do such activity because the mind, uncontrolled mind is your greatest enemy. अब uncontrolled mind है आपका greatest enemy, तो फिर mind क्या करता है, आप कहीं जाके कुछ गलत काम कर दोगे, ड्रग्स ले लोगे, या डिप्रेशन में सुसाइड कमिट कर लोगे, पिल्स ले लोगे, या if you are lusty for some boy or girl, उनका वो अगर नहीं मिले तो उनको ऊपर आजकल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, what they call तेजाब वगैरह फेंक देते हो, या you kill, या you go to acid attack, या or you go to terrorism and all, I've been wronged, so if I am being wronged, I am going to wrong everyone now. So you go into underworld or terrorism, and all these things start because of intelligence is lost. आपका इंटेलिजेंस लॉस होता है, and ये सारी नेगेटिविटी, you fall down again into the deepest regions. So इसका solution क्या दे रहे हैं नारद मुनि? आप ये solution दे रहे हैं, it is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of senses with their sense objects can cross over the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. So when you start chanting mantra, mantrayate iti mantra, mind is like a unregulated, अगर कोई मशीन गन चालू हो गई अनरेगुलेटेड, बिना कुछ मिसाइल या कुछ भी, तो कहीं भी चले जाएगी, किसी को भी लग जाएगी. तो माइंड, uncontrolled mind, the mind which is not under the intelligence is like unguided missile. किसी के ऊपर भी कहीं भी जाके बरस जाना, कुछ भी गलत काम कर देना, like that. So the mind has to be controlled by the intelligence. So intelligence को strong करने का होता है knowledge, and mind को strong करने का होता है mantra. When you chant the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, this mantra, then the mind starts thinking positively, spiritually,
and the intelligence is simultaneously giving knowledge what to think, what to do, and the anxiety, stress which you are feeling also level goes down. You don't want to be once you're chanting, then जो आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है वो अपने आप ही चले जाती है, because you are so much surcharged with spiritual bliss and devotion that you no longer worry about your anxiety, stress, depression, all the lower things in life. You don't worry about them, because now you're getting enjoyment, you're getting bliss, you're getting anand, real anand from the spiritual platform that is not available in the material platform. Alright. Soul is looking for enjoyment. Soul is looking for anand. Soul is looking for bliss. Soul is looking for eternal bliss, but in the wrong place. Every one of us wants love. Every one of us wants anand, bliss. But we are looking it in material things. We think that our material paraphernalia, maybe whatever you can call it, parents, nation, husband, wife, boyfriend, girlfriend, children and all, sister, brother, they will give us anand. But can they give you anand? Can they give you permanent bliss? Can they give you permanent happiness? Can they give you permanent love? Who thinks that all these things can give you permanent love, permanent care, permanent anand, permanent bliss? So no one can give us eternal anand. All your relationships, whichever can be, whether parental, with your parents, you may think, I love my parents so much, my parent loves me so much, but is that love eternal? Is that love eternal? The love between you and your parents. Why it is not eternal? How it is not eternal? The body is finished, that is finished. Because the parents are not eternal. Yeah, someone can say, but I love my parents, so I think my love will be eternal. Okay, very good. आप last life में आपके parent कौन थे? If your love is eternal to your parents, you should know, ना? आप last life में किसे प्यार करते थे? We don't know. That means it is temporary, not eternal. This itself proves that you don't remember who were your parents and how much you loved them. That means it is temporary. Similarly, ये life का भी temporary होगा जब life खत्म हो जाएगी. So nothing in the material world is permanent. But we all want permanent love. Right? We all want permanent love or no? सबको चाहिए permanent love, permanent happiness, permanent bliss, permanent satisfaction. किसको नहीं चाहिए? तो किससे मिलेगा हमें? जो इटर्नल इंसान है उसी से मिल सकता है. हम उसको मैटर में ढूंढ रहे हैं, हम उसको हमारे मटेरियल रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं. इटर्नल लव को, इटर्नल रिलेशनशिप को, इटर्नल हैप्पीनेस को, इटर्नल रिलेशन, इटर्निटी को हम उसको मटेरियल रिलेशन में ढूंढ रहे हैं, जो इटसेल्फ इज टेम्पररी. लेकिन वो अगर हमें इटर्नल लव चाहिए, इटर्नल केयर चाहिए, इटर्नल ब्लिस चाहिए, इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, इटर्नल नॉलेज चाहिए, जो कभी नहीं खत्म हो, जो टू वे हो, वन वे नहीं हो, कि मोस्ट ऑफ द टाइम वन वे होता है हमारा लव जो भी होता है यहाँ पे, तो उसको हमें भगवान से ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इटर्नल है और हम इटर्नल है. हमारी बॉडी टेम्पररी है, हम इटर्नल है. इसलिए सारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब का मूल कारण ये है कि हम वो चीज ढूंढ रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में जो है ही नहीं. बताइए, so many people are there. What is your main issue that you face depression, stress, anxiety? क्या क्या प्रॉब्लम के कारण आपको ये सब होता है? Attachment, parent, studies, desire, attachment, future. Future is the only future is death. Death is the only future in the material world. पैसा नहीं है, टेंशन. और इसका सोल्यूशन कहां से आएगा? Give me one material solution to all these things. इसका एक material solution दो मुझे. जो भी आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है,
Give me a material solution to this. Your pills, क्या है material solution उसका? There is no material solution. Yes, there is no material solution. Pills are also temporary. Yes, none. So why are we suicide? Suicide is not a solution. Suicide करने के बाद में जितने साल की उम्र बची है ना, उतने साल आपको सरल बॉडी में गुजारने पड़ते हैं. Understand? अभी तो आप अपना भूख प्यास मिटा सकते हो क्योंकि ग्रॉस बॉडी आपके पास में. ये सटल बॉडी में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो बुझा भी नहीं पाओगे. 2 दिन बिना भूख प्यास के रहो, कैसी हालत होगी? Stay for 1 week without water and food. How will the feeling be? वही फीलिंग आपको सटल बॉडी में होती है, भूत की बॉडी में. आपको लगता है उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होती है. You will have the same feeling which right now if you don't eat for 1 week and for 1 week no water, no food, the same will be there in the subtle body, same pain, same anxiety, but you won't be able to do anything there. At least ये body है, आप खा तो सकते हो कुछ, आप पी तो सकते हो, वहां पे तड़प जाओगे पीने के लिए, खाने के लिए, और फिर क्या करोगे? दूसरे लोगों को परेशान करोगे, किसी की बॉडी में घुसोगे. क्यों? क्योंकि वो पिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आनंद मिलता है उससे. अरे हाँ, why ghost enters other bodies? To satisfy his hunger, his thirst, his sexual desires. इसके लिए घोस्ट किसी की बॉडी में एंटर करते हैं क्योंकि उनको घोस्ट की बॉडी में कुछ भी नहीं कर सकते. वो they can't touch, they can't feel, they can't do anything there. So imagine you have all these desire in the subtle body but you can't do anything. So do you want such a life? And वो कब तक जीना पड़ेगा आपको? जब तक आपकी लाइफ लिखी हुई है. कोई शॉर्टकट नहीं है. सुसाइड इज नॉट अ शॉर्टकट. वी थिंक सुसाइड करके हमारी बॉडी खत्म हो गई, हमारे प्रॉब्लम खत्म हो गई. नहीं हो गई, 10 गुना ज्यादा बढ़ गई आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि वो बॉडी में कोई कमिंग बैक भी नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है. नथिंग, एंड जस्ट सफरिंग सफरिंग सफरिंग. So there is no solution, material solution to these problems. So then where is the solution? Where is the solution? Why there is no material solution to any of these problems? Stress, depression, anxiety, lack of confidence, this. ये क्यों नहीं है? इसका कोई material solution क्यों नहीं है? After suicide, you'll roam till your life is there. Because suicide is artificial death. So if your life is 50 years, if you commit suicide 25 years, 25 साल तक घोस्ट की बॉडी में घूमना पड़ेगा. Why? All these things cannot be solved by material things, material solutions. Yeah, one is temporary. Second, because ये जितनी problems है सब mind related है. जितने भी problems है सारे mind related है. माइंड को फील होता है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब माइंड से फील होता है हमको ना, राइट? सब माइंड रिलेटेड है. और माइंड का क्या है सोल्यूशन? मैटर भौतिक संसार के पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज भौतिक संसार में माइंड क्या है वही पता नहीं है. मटेरियल साइंस डजंट नो व्हाट इज माइंड. मटेरियल साइंस नोज व्हाट इज ब्रेन, डजंट नो व्हाट इज माइंड. माइंड इज सटल. अगर प्रभु कोई किसी को किल कर देता है तो सोल का क्या होता है? किल कर देता है तो सोल को अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, बट सुसाइड एक्सीडेंट इज आर्टिफिशियल डेथ. सो इन दैट यू बिकम घोस्ट. हाँ, अगर किलिंग में अगर आपकी बहुत अटैचमेंट है बॉडी से, देन यू बिकम घोस्ट. सो द साइंस हैज नो सोल्यूशन टू द माइंड प्रॉब्लम, बिकॉज द साइंस डजंट रिकॉग्नाइज माइंड, रिकॉग्नाइज ब्रेन एंड द केमिकल्स दैट आर वर्किंग थ्रू द ब्रेन. So the only solution you'll get is in spirituality, because spiritual process recognizes the mind, intelligence as subtle bodies, and it has a solution to that.
mantrayate iti mantra, that liberates the mind, that is mantra. When you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, what is happening? Your mind is getting relieved, liberated from this stress, anxiety, depressions, and all these things. So this is the solution even Narad Muni is giving here. The constant chanting of the trance activities of personality of Godhead. Chanting, mantra, he's saying. Why not yoga? Because that is also bodily. Yogic process is also bodily. प्राणायाम ये सब करते हैं, सब आप बॉडीली प्रोसेस कर रहे हो. जब तक उसमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऐड नहीं होगी, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. इसलिए खाली वैक्यूम में चैंट करना या थिंक करना, माइंड बैठ के लोग बैठते हैं ना और मेडिटेट करते हैं, ओम पे तो कर सकते हैं लेकिन बिना यानी कोई भी साउंड पे नहीं, या अपने सांस पे मेडिटेट करते हैं, ऑन देयर ब्रेथ. जैसे होता है योगिक प्रोसेस, आपके सांस के ऊपर आप फोकस करो, आपके हार्ट के ऊपर फोकस करो, या किसी लाइट पे फोकस करो, या मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती पे फोकस करो, होता है ना. देखा है, मोमबत्ती पे फोकस कराते हैं, या लाइट पे बोलते फोकस करो, या अपने सांस पे फोकस करो. सांस क्या है? What is the breath? Air. What is air? What is air? Matter. Very good. मोमबत्ती की लाइट क्या है? Matter. Material element. Fire. Matter. मतलब earth, water, fire is material elements. कृष्णा बोलते हैं ना, earth, water, fire is material elements होता है. Right? So जितने भी हैं जो meditative process जो हो चलते हैं इन द सो कॉल्ड योगा के नाम से, वो सब में मटेरियल एलिमेंट्स यूज है, एक भी स्पिरिचुअल एलिमेंट यूज नहीं है. इसलिए मंत्रा मेडिटेशन बोला गया है, क्योंकि मंत्रा जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. इन द एज ऑफ कलयुग कृष्ण हैज टेकन अवतार इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम. सो कृष्णा नाम चिंतामणि चेतन रस विग्रह. So this name is non-different from Krishna. It is completely spiritual. So when we get attached or get linked to any spiritual substance or material or spiritual consciousness, then हमारा mind matter से relieve हो पाएगा, material problem से. Matter का solution matter में नहीं मिलेगा. मैं पहले समझा दूँ, matter means temporary होता है, तो उसका solution matter में नहीं मिलेगा. इसके लिए कलयुग के अंदर सारे योगिक प्रोसेस other than bhakti yoga is discouraged by Ved Vyas, by Narad Muni, by Krishna himself in Bhagavad Gita, where Krishna says this is impractical, and this is and just meditation भी होना चाहिए. तो नाम पे मेडिटेट करो, या भगवान की विग्रह पे मेडिटेट करो, या फोटो पे मेडिटेट करो. वेग पे मेडिटेट करना is never recommended anywhere in the Shastra. And the next shloka, Narad Muni answers this. He says, यमादिभिर योगा पादेर काम लोभ हातो मुह मुकुंद सेवया यादवत तथात माधव न सम्यति. It is true that by practicing restraint of the senses by the yogic system, one can get relief from the disturbance of desire and lust. खाली उससे मिलेगा desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul. और जब तक सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर से आप क्या होता है, टैबलेट से क्या होता है, जो आप पिल्स लेते हो उससे क्या होता है, माइंड को सेटिस्फैक्शन, ब्रेन को मिलता है सेटिस्फैक्शन, राइट. ब्रेन पैसिफाई हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए आपकी एंजाइटी खत्म होती है, बट आफ्टरवर्ड्स जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ, ब्रेन का अल्फा गामा बीटा वेव्स फिर ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, एंड अगेन स्ट्रेस एंजाइटी. सिमिलरली योगिक प्रोसेस में भी जो आप करते हो, योगा, अष्टांग योगा, ऑल दीज योगिक प्रोसेस व्हिच इज पतंजलि योगा एंड ऑल दोस थिंग, उसमें वो जब तक कर रहे हो आप, वो टाइम तक आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा डिजायर और लस्ट से, तो आपका थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाएगा. बट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द सोल. मींस जो सोल रियल आनंद को ढूंढ रहा है वो नहीं मिलेगा इससे. और जब तक वो नहीं मिलेगा आपको,
जब तक आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल, lack of confidence, lack of purpose in your life, disturb, all these things, suicidal thought, ये नहीं जाएगा. It is not possible. इसलिए if you know any people who are stressful and all those things, tell them don't waste your money in all these material processes or in medicine. सबसे सिंपल और फ्री प्रोसेस है मंत्र मेडिटेशन. कोई पैसा नहीं लगता इसमें. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंट करो. 0 रुपए लगता है आपका. खाली आपको आपका टाइम देना है उसमें. 2 घंटा मॉर्निंग में. You give your time, Krishna will give you stress-free, eanxiety-free life. था ना डायलॉग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो तुम मैं टाइम दो, कृष्णा तुम्हें आजादी देगा. अपना टाइम दो 2 घंटा रोज सुबह और कृष्णा तुम्हें आजादी देगा. किससे आजादी? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, काम, क्रोध, लोभ, सबसे आजादी मिल जाएगी. एंड you can lead a peaceful, blissful, eternal life with Krishna. Too much time, then जाओ खड़े हो जाओ 10,000 साल मेडिटेट करो एक टांग पे. फिर भी रंबा मेनका आएंगी और आपका खत्म हो जाएगा. विश्वामित्र ने 50,000 साल तपस्या की थी. 50,000 years तपस्या विश्वामित्र did. After doing 50,000 तपस्या, रंबा इंद्र ने बोला भैया 50,000 साल तपस्या कर लिया इसने, ज्यादा करेगा 1 लाख साल तक तो इंद्र बन जाएगा ये, तो रोको. तो मेनका रंबा को भेज दिया, उर्वशी को भेज दिया. उनके खाली पांव के पायल के नॉइस से विश्वामित्र का मेडिटेशन टूट गया. मतलब 50 साल का जो मेहनत किया अष्टांग योग में, वो सब पानी में मिल गया. एक पायल की आवाज, just one पायल की आवाज. That's why it is said here, it may give relief from for the disturbance of desire and lust, but it is not sufficient to satisfy the soul. सोल को आनंद नहीं मिलेगा, सोल को हाई टेस्ट नहीं मिलेगा. इस प्रोसेस वो भक्ति से ही मिलेगा, वो चैंटिंग से ही मिलेगा. For this satisfaction to the soul is derived only from devotional service to the personal Godhead. Only from devotional service. क्या है? मुकुंदा सेवया यतवत. मुकुंदा सेवया यतवत. सर्विस टू मुकुंदा. उसी में ही तथा आत्मा आपकी आत्मा को पर्पस उसका सेटिस्फाइड होगी. तदात्मा सम्यति मीन सेटिस्फाइड. ओनली दैट कैन सेटिस्फाई द सोल. क्या? मुकुंद सेवा, मुकुंद की सेवा, मुकुंद के लिए भक्ति, मुकुंद के प्रति डिवोशनल सर्विस. केवल वो ही आपकी आत्मा को सेटिस्फाई कर पाएगी. स आत्मा सुप्रसिद्धति. इसलिए सबय पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति अधोक्षजे. अहितु की अप्रतिहता स आत्मा सुप्रसिद्धति. सबय पुंसा सारे लिविंग एंटिटीज का परो धर्मा, टॉपमोस्ट धर्मा क्या है? ये तो भक्ति अधोक्षजे, भक्ति कृष्णा के प्रति. So this is the solution to all the spiritual counseling में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सबका यही सोल्यूशन है. भगवान की चैंटिंग करो, भगवान की सेवा में लगो. तद विधि प्रणिपातेन परिपश्चिना सेवया. Surrender, ask questions and do seva. Seva includes chanting. This is the three things, and your life will be happy. Chant and be happy. Prabhupada says. Oh Vyasdev, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. Means this process will make you realize yourself. Self-realization, this chanting of Hare Krishna. All this will be conducive for your personal satisfaction also. Sutta Goswami said, thus addressing Vedvyas, Narad Muni took leave of him, and vibrating on his veena, he left to wander at his free will. All glories and success to Sri Narad Muni, because he glorifies the activities of the personal Godhead, and so doing he himself takes pleasure and also elevates all the distressed soul of the universe. Thus ends the Bhaktivedanta purport of first canto, 6th chapter. So this is the solution. Understand?
Prabhu.